Hi everyone, welcome back to Super Kalam. Today I sat down, put my head down to solve CSAT questions, and I also understood and realized why it is known as one of the toughest CSAT paper since the last 2 3 years. I'm going to not just discuss why it was tough, but what exactly was tough and how we need to prepare for 2027 attempt. Let's start. Hello everyone, this is the CSAT question paper of prelims 2026. And I would not be lying if I say that UPSC has almost completely moved away from the formula heavy approach to, and it has shifted towards the thinking aptitude approach. If I look at CSAT paper of 2026, from formula heavy to thinking heavy approach. And in this paper I'm going to first of all do a complete pattern analysis. And if you're preparing for UPSC 2027, this session you cannot miss. Based on this year's pattern, we are going to prepare for 2027 attempt. All right. Now first let me help you understand the key takeaways from this year's question paper. CSAT, you earlier people used to say that CSAT is a math paper, but now after this year we can fairly and carefully say that CSAT is no longer a math paper. Okay, it is no longer a maths paper. This paper has proved otherwise, because if we look at different areas and the type of questions which have come, the number of questions which have come from those areas, reading comprehension around 25 to 30, then logical reasoning around 20 to 25, then data analytics or data sufficiency around 5 to 7 questions. अगर हम देखें बेसिक मैथ में से कितने क्वेश्चन आए हैं, अराउंड 10 to 12. दिस इज अप्रोक्सीमेट, आई एम टेलिंग यू. डिसीजन मेकिंग around 5 to 7. Analytical puzzles, because these are very important part of your CSAT paper. Analytical puzzles around 8 to 10. Maths has become a supporting player now. Reasoning and comprehension, they are dominating the paper. If you look at passages, you will notice one thing, that the passages have shifted towards social issues. In the passages you will find topics on social issues, topics on technology, topics on AI, environment, public policy, sports and economy. So that is why I ask and request every time that students please start reading the editorials in the newspaper. Then only you will be able to learn how to make an inference. Or else your analytical skills, if you're dependent on YouTube current affair videos, monthly magazines, your inference making skills are going to drop down, and that's when you will see ki, oh, passages are really lengthy, we don't have enough time to read them. It is not that. If your reading speed is good, what else is required to solve a passage? Reading speed. Your reading speed is tested, which can only improve only when you are reading the newspaper, the editorials. How well can you make an inference or a conclusion? How well can you eliminate or use elimination method? How well can you apply your judgment? That is tested. And ये कोई कोचिंग आपको नहीं सिखा सकता. तो आप लोगों को थोड़ी सी अपनी गलती भी देखनी पड़ेगी कि आप लोग कहाँ गलत कर रहे हो अपनी जर्नी में. यूट्यूब के करंट अफेयर वीडियो पे डिपेंडेंट हो आप लोग. यू आर डिपेंडेंट ऑन मंथली मैगजीन्स. Still you will find a lot of students who will be searching internet for monthly magazines, and I don't blame them. That is how they have trained themselves. So this is what you have to break down from. ये pattern break आप ही को करना है, मुझे नहीं करना है. You have to break this pattern yourself. अगर हम if we look at the passage in this year's paper, several questions required not just reading the passage but also having an inference, also eliminating option, which is obviously जब भी आप reading comprehension देखोगे तो उसमें यही process use होता है, and then you arrive to the final answer. This is CAT style critical reasoning which has been tested now. अगर हम क्वेश्चन वाइज पेपर पैटर्न को समझें, ठीक है, सो आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 1. इफ यू लुक एट द क्वेश्चन वाइज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, राइट, क्वेश्चन 1 to question 5,
They were very classic UPSC question. UPSC only asked if the data is sufficient. अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में तो यही पूछा गया if the data is sufficient. Then another important, they are not asking you to find answer from question number 1 to 5. They are not asking you to find the answer. They are checking if you analyze the data nicely or not. Look at question number 2. अच्छा यहाँ देखो, question number 2 की तरफ देखो. Which of x and y is bigger? That is the basic question, right? अगर हम question number 2 देखें, which of x and y is bigger? Statement 1 is saying x square, it is less than y square, which is less than 1. And statement 2 ये रहा, right? अब what is the trick? You don't have to calculate. Never calculate. First understand this. Never calculate. Students wasted their time over here. You have to ask a simple question. ठीक है? What is the question that you have to ask? First, can statement alone decide? क्या सिर्फ statement से decision लिया जा सकता है? Only single statement. If we look at only single statement, can only this statement answer this question? Or can both together decide? क्या, or we will need both the statements to analyze both the statements to decide the answer. Now here, if you are preparing for CSAT 2027, then my advice would be, please practice CAT data sufficiency question. CAT data sufficiency question. Please practice them. Please practice old CSAT question paper, old ones. And यहाँ पर ना, here in these kind of question, the GMAT style sufficiency is tested. Data sufficiency जो होता है ना, उसमें GMAT style के questions, GMAT CAT के कुछ पिछले 5 साल के PYQ ज़रूर देखना. If you want to master data sufficiency, because it is important now. More questions are coming from data sufficiency alone. Okay? Point clear हो रहा है यहाँ तक सभी को? अब this was category 1 kind of question. ठीक है, 1 to question number 1 to question number 5. What was first category, which was data sufficiency category. Now let's go to category 2. ठीक है, यहाँ से question number 6 से. This is the passage which was given, and from here, from question number 6 to question number 7. यहाँ पर जाओगे question number 7. English वाला खोलती हूँ. 6 to 7. ठीक है, this is category 2. What is that category? Reading comprehension category, which was the largest portion. Around 30% part of CSAT was reading comprehension only. That means if you are just mastering maths, it is not sufficient now. अगर हम कालाग्राम पैसेज इसी को देखें, ये सिंपल फैक्चुअल इन्फेरेंस यहाँ से निकालना था आपको. मोस्ट आंसर्स वर डायरेक्टली अवेलेबल. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर भी काइंड ऑफ ईजी था, बट इवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी में हमने 3 ट्रेंड्स देखे हैं. वी हैव सीन 3 ट्रेंड्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. देयर आर 3 लेवल्स दैट टू सॉल्व अ क्वेश्चन. लेवल 1 इज direct, where you can directly get the answer from the passage itself. Then comes level 2. Level 2 में क्या होता है? In level 2, inference has to be made. You have to make a conclusion. You have to derive an inference. You have to read between the lines. And then we have level 3, which is critical reasoning. यहाँ पर आपके author का ना intention समझना है. Here you need to understand author's intention. What is the intention of the author? You have to identify hidden assumptions in this category, in this level. Hidden assumptions. And what can be the future implication in this kind of situation. ये हैं 3 level आपके. So, if you are preparing for 2027, what will be the strategy? Please, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ओपेड सेक्शन होता है, उसको पढ़ना शुरू कर दो आज से ही. फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. सुपर कलाम्स DNA इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर अ बिगिनर इन दिस जर्नी. द हिंदू का एडिटोरियल, इफ यू आर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, देन द हिंदू एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नो शॉर्टकट. 15 minutes dedicate daily to read op-ed section and the Hindu newspaper editorial. Now let's go to question number 13. ठीक है, मैं आपको question number 13 दिखाती हूँ यहाँ पर. This is question number 13. ठीक है,
Now this is category 3 that we are solving, which is arithmetic category. This was surprisingly easy. Question number 13 अगर आप देखो, toy jumps, okay, forward 5, a toy T jumps forward or backward. In each forward jump it moves 5 forward, ठीक है, it moves 2 backward, 5 forward 2 backward. तो नेट गेन क्या हुआ, 5 कदम आगे कूदा 2 कदम पीछे, नेट गेन वुड बी, राइट इट डाउन, net gain would be 3. Now the question says, if in 31 jumps T moves exactly 15 forward, okay, after 31 jumps displacement is 15, then it is asking what is the difference of number of forward and backward jumps. Okay, fast method क्या है, forward का मतलब हो जाएगा forward equals F, backward equals B. F plus B is total 31 jumps. 5 forward plus 2 backward equals 15. Okay? अब इसको सब्सिट्यूट करो वैल्यू को. 5 forward plus 2 backward कितना है, 31 माइनस फॉरवर्ड इक्वल्स 15. यहाँ पर हमने देखा ना, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. सो 7F would be 77, F would be 11, 7 ones are 7 11s are. तो B में वैल्यू ऐड करो, तो B would be 20. What will be the difference? Difference would be 9. So answer would be D. बेसिक यहाँ पर क्या लगाया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली लॉजिक लगाया है. ओनली लॉजिक कैन हेल्प यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. UPSC asked school level arithmetic. This was not CAT level math. Okay. अब अगर अब कैटेगरी 4 पे जाते हैं, this was category 3. Now question number 14 पे जाते हैं. Now this is category 4, which was related to seating and arrangement. Okay. Question 14 to question 15 were seating arrangement related question. Here these were moderate, but they were time consuming. Okay, but always remember, write it down, never start paper with seating arrangement based question, because इसमें time जाता है, ठीक है, it consumes a lot of your time. Keep it for the second round of solving paper. Okay, then category 5 question number 16 में अगर हम जाए, this is 5th category, which was economy based reasoning question. economy based reasoning question. यहाँ पर डिफ्लेशन के ऊपर पैसेज था. यूपीएससी इंटीग्रेटेड है, इकोनॉमिक्स प्लस लॉजिक यू हैव टू अप्लाई दिस इंस्टेड ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स. ठीक है, यहाँ पर भी लॉजिक और आपकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो टेस्ट की जा रही है. अगेन इफ यू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 पे जाए, this category of question is known as pattern recognition. Write it down. 2027 aspirants, write it down. This is the syllabus of CSAT I'm giving you. There was a string which was given to you. Okay, this is a string. Then you have to find the 7th and the 8th position. It is easy if you can identify the pattern, but it is hard if you are applying brute force. UPSC का यहाँ पर मैसेज क्या है, that you have to spot the pattern. Calculation work नहीं करेगा यहाँ पर, pattern work करेगा यहाँ पर. चलो let's solve this question. All right, now a very quick way to solve it is to look at the fixed ending of the string. The last two letters at position 13 and 14 are BA, and since the question is saying that a pattern made of A and B is repeated more than once, यहाँ पर लिखा है ना A and B is repeated more than once. A और B से बना हुआ पैटर्न एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. सो द मोस्ट नेचुरल चॉइस इज टू मेक द अननोन पेयर एट पोजीशन 7th 8th द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ BA. सो मान लो 7th पोजीशन पर वी हैव B एंड 8th पोजीशन पर वी हैव A. देयरफॉर x इक्वल्स BA. आंसर हो जाएगा C. कैटेगरी 7 इज स्पीड टाइम डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, यहाँ से समझ आएगा. स्पीड टाइम
and distance related questions are in category 7. Now this is a question related to train and a person. Okay, classic relative speed related question है. यहाँ पर relative speed आपको formula apply करना है. When opposite directions are there, then relative speed में क्या होता है, sum करते हैं. In opposite direction, when there is same direction, the things are moving in the same direction, then relative speed कैसे निकालते हैं, subtract करके, difference करके. So one formula will solve most of the speed time distance related questions. So for 2027 aspirants, please focus on relative speed, boats related questions, trains related question. Nothing beyond class 10. Okay. Then comes category 8, which is percentages. ये देखो percentages and averages. Okay, यहाँ पर question number 20 में दिखाती हूँ. कहाँ गया question number 20? Yes, here we have question number 20. Then we have question number 22 to 25. 22, 23, 24, 25. These are percentage and average related question. Very basic question again. Okay, average increased from 100 to y. One score replaced. एवरेज रिप्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने ही हैं फॉर 2027. ऑलवेज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. नेट इंक्रीज का मतलब क्या होता है? नेट इंक्रीज मीन्स न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज चेंज? इट मीन्स नेट इंक्रीज प्लस डिवाइडेड बाय नेट इंक्रीज डिवाइडेड बाय होल नंबर. ठीक है, दैट वुड बी एवरेज चेंज. ये आप फॉर्मूलाज याद रखना. ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज. देन कैटेगरी 9 रिलेटेड क्वेश्चन, साइंटिफिक रीडिंग पैसेज. क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखोगे ना, इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 26, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था बट ऑन साइंस एंड टेक. सो 26 to 28 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. दिस इज important. UPSC is testing, can you understand science even if you are not from science background? Exactly what an IAS officer does. कैटेगरी 10 31, अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 33, देवर AI एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस. पैसेजेस थे, अगेन पैसेज था. ठीक है, सो फॉर 2027 प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड द न्यूज़पेपर एंड फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा. ऑलराइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब मैं आपको ना प्योर रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 37 वर प्योरली रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. द रीजनिंग क्वेश्चंस वर मॉडरेट टू डिफिकल्ट. क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू रैंकिंग, क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू अरेंजमेंट. अगेन क्वेश्चंस विच आर टेस्टिंग योर कॉमन सेंस, राउट्स एंड सर्कुलर ट्रैक. ये आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाना है. इट इज दिस पेपर इज टेस्टिंग योर कॉमन सेंस. दीज क्वेश्चन सेपरेट क्वालिफाइड वर्सेज नॉन क्वालिफाइड, रिमेंबर दिस. एंड क्रिटिकल रीजनिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 52 टू क्वेश्चन नंबर 54 आगे करती हूँ. ठीक है, जस्ट नोटिस क्वेश्चन नंबर 52, यस ओवर हियर 52 टू क्वेश्चन नंबर 54. They were all questions related to critical reasoning, AI replacing jobs, human behavior, social outcomes. These questions require to understand author's viewpoint, not facts, but author's viewpoint. Okay? So these are the kind of questions. Now if we have to make an interpretation for 2027, अगर हमको एक judgment 2027 के लिए निकालनी है, then my prediction would be what can be the weightage. Write it down. Comprehension, when it comes to comprehension, 35% expected share, 35% in 2027 question paper. Logical reasoning 30%. Basic math की अगर आप बात करें, so I predict that approximately 15% of the paper would be basic math. डेटा सफिशिएंसी की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट डेटा सफिशिएंसी अराउंड 10%. डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग अराउंड 10% ऑफ द पेपर वुड बी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड. नाउ हियर स्टूडेंट्स कैन मेक फॉलोइंग मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग क्वांट फॉर 3 months,
भाई रियलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो. मिस्टेक 2, इग्नोरिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. 40+ मार्क्स तो डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंडेंट है. देन प्रैक्टिसिंग SSC मैथ. नो, UPSC इज आस्किंग थिंकिंग क्वेश्चंस. Not timing the mocks. If you are not setting a timer while solving CSAT mocks, then it is going to be tough for you. Paper is more about speed than difficulty. So if I were mentoring a 2027 student today, I would say 20 minutes daily the student should invest in reading comprehension. 10 reasoning questions should be solved by student on alternate days. Alternate days. 1 weekly full length टेस्ट CSAT मॉक शुड बी गिवन. मंथ में PYQ 2020 से 2026 के PYQ तो सॉल्व करने ही करने हैं, मल्टीपल रिवीजन देने ही देने हैं, बिकॉज CSAT 2026 वॉज नॉट अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन. इट वॉज अ टेस्ट ऑफ रीडिंग एबिलिटी, रीजनिंग, मेच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड मेंटल डिसिप्लिन अंडर टाइम प्रेशर. ओके, so remember, this is how you have to cope with CSAT paper if you are giving 2027 attempt.